Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 10 mathematics important questions, that is the questions which are asked in last few years in the board exam, right? We will be seeing the questions as well as the solutions to them, right? So it will be a very quick revision for all of you, and if you watch this video completely, it's definitely going to help you in scoring better marks, right? Some questions may be repeated or the pattern may be repeated, so you can have a look and get an idea, right? If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and get complete benefit of this series, right? So from chapter 1, real numbers, in the year 2019, these three questions were asked, like find the HCF and LCM of 56 and 72 using prime factorization method. Okay, here's the solution. Second, like prove that the sum of two irrational numbers can be rational, right? This is the solution. Then find the largest number that divides 270 and 306, leaving the same remainder. So these kinds of questions were asked in the year 2019. So if we see for the year 2020, questions are asked like prove that this number is irrational. Okay, find the HCF of these two by division algorithm. Express this ratio as a terminating or recurring decimal. So all these kinds of questions are asked, right? Then 2021, see one question is same, like show that this is an irrational number, then LCM HCF using prime factorization. And a question is type का है, find the largest number that divides these leaving the same remainder. So basically इन्हीं three types के questions हर year आ रहे हैं, right? Then in year 2022, see root 7 is irrational, we have to prove this. HCF and LCM by division method, right? And then HCF LCM using prime factorization method. In 2023, again HCF LCM using prime factorization, smallest number divisible by both, तो LCM निकालना है and show that this is irrational. 2024 में भी आप देख सकते हो latest root 3 is irrational, ये prove करना है. LCM HCF using division algorithm, okay, and largest number that divides both these leaving the same remainder. So आप देख सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, आप इनके सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करोगे तो you will definitely get full marks in this chapter, right? Then chapter 2, polynomials. See, these three questions were asked in 2019. Find the zeros of the polynomial, okay? K find out करना है if x equal to 3 is a zero of this polynomial. Then divide this polynomial by this using division algorithm. Quite simple questions. 2020 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, अल्फा बीटा जीरोस हैं तो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, राइट? देन अगेन डिवीजन करना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. 2021 में भी सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर एक जीरो गिवन है एक पॉलिनोमियल के लिए तो के निकालना है, और थर्ड हुई डिवीजन एल्गोरिथम. 2022 में जीरोस निकालने हैं, ठीक है, अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, और थर्ड अगेन डिवीजन. ओके, 2023 it says zeros of this polynomial, then we have to find a quadratic polynomial जिसका sum of zeros and product of zeros given है, then division. तो आप देख सकते हो डिवीजन का क्वेश्चन हर साल आ रहा है. Then 2024 में फाइंडिंग जीरोस, ठीक है, एक जीरो गिवन है तो पॉलिनोमियल में के निकालना है, और डिवीजन. So if you see the pattern of questions na last 5-6 years ka, so you can definitely like predict what kinds of questions will be asked this year, and you can practice that and get good marks, right? So मैं आपको सारे questions और उनका solution show कर रही हूँ, आप वीडियो को pause करके उसको आप solve खुद भी करके देख सकते हो, and you can check कहीं आपको अगर problem solve नहीं होती है तो you can post it in the comment section. मैं एक separate video उस question के लिए create करूँगी, right? Now comes chapter 3, pair of linear equations in two variables. तो इसमें three questions were asked in the year 2019. System of equations given है, इसे solve करना है, ठीक है. फिर हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है. If this pair of equation has infinite many solutions, ठीक है, इसमें आप कंडीशन लगाओगे.
देन अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। जहां मेंशन नहीं है कि कोई मेथड, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर अगर मेथड मेंशन्ड है तो आप वो मेथड यूज करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। 2020 में ये 3 क्वेश्चंस आए थे। वन इज एलिमिनेशन मेथड से आया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया था और एक के की वैल्यू निकाल ली है इफ देयर इज नो सॉल्यूशन। तो आपको बेसिकली सारे मेथड्स अप्लाई करने आने चाहिए और एक आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन सबके लिए। 2021 में भी आप देख सकते हो सॉल्विंग का क्वेश्चन है, फिर सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन है, राइट, एंड अगेन सॉल्विंग। 2022 सॉल्विंग, नो मेथड इज मेंशन्ड, सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे अगेन कंडीशन एप्लीकेशन। 2023 में एलिमिनेशन मेथड आया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया है, अगेन कंडीशन वाला क्वेश्चन, राइट। 2024 में भी आप देख सकते हो सॉल्विंग, देन सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन एंड देन कंडीशन क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स द चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें देखो आप 2019 में 3 क्वेश्चंस आए थे। वन इज सॉल्विंग दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसा मेंशन किया है मेथड वैसा ही यूज करना है, और फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, राइट। इन द ईयर 2020 देखो 3 क्वेश्चंस आए थे। वन इज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, देन सॉल्विंग इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और थर्ड क्वेश्चन था डिस्क्रिमिनेंट की कुछ कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हाउ कैन यू कंक्लूड अबाउट द रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट की सारी कंडीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। 2021 में अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, शो दैट रूट्स आर इक्वल, तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 दिखा दो, उस केस में रूट्स इक्वल होते हैं, राइट। 2022 में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और सेकंड क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सीख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लो, और डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस देख लो, राइट। तो अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो यू कैन वॉच माय प्लेलिस्ट, उसमें सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियोस हैं, सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज देयर, राइट। 2023 में एक क्वेश्चन आया है सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, एक आया है सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करने हैं एंड शो दैट दे आर रियल एंड इक्वल, क्वाइट सिंपल। और 24 में आया है हमारा सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइज एंड फाइंड द रूट्स, ओके, एंड देन डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर 5। इससे रिलेटेड 2019 में 3 क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट इज लाइक फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। फिर है सम टू n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये इसमें गिवन है तो उसे यूज करके डी निकालना है। एंड थर्ड इज 20th टर्म निकालनी हो एपी की। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड 2020 में, फाइंडिंग सम टू n टर्म्स, ओके, then using some conditions finding a and d, and third is like finding d using some conditions, correct. Nth term given है, okay, find the 10th term, you can put n as 10, right. एक क्वेश्चन फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म का है, एक है 18th टर्म निकालनी है। तो सारे फॉर्मूलाज अगर आपको टिप्स हैं यू कैन इजीली डू दैट। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, क्वाइट सिंपल, ठीक है, डी निकालना है इसमें, और थर्ड क्वेश्चन था उसमें ए निकालना है, राइट। 2023 में सम टू 30 टर्म्स आया था, एक आया था कॉमन डिफरेंस निकालना है, और एक था 50th टर्म फाइंड आउट करनी है। इन द ईयर 2024 फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, फाइंड 25th टर्म, ठीक है, फिर यूजिंग सम कंडीशंस फाइंड डी। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इजी वे में आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है, दैट्स इट।
नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो 2019 में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सी ज्योमेट्री में आपको ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे थ्योरम्स ऑन टिप्स होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको कंप्लीट मींस गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड, यू कैन वॉच माय प्लेलिस्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ओके। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हो, एएएस क्राइटेरिया प्रूव करना है, राइट। देन इन अ ट्रायंगल सम एंगल्स एंड साइड्स आर गिवन, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। So if you have practiced enough and if you know everything, you can easily answer these. कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते ज्योमेट्री में, राइट। 2020 में अगेन सी दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बीपीटी का प्रूफ आया था, राइट। 2021 में वेरी सिंपल क्वेश्चंस वर आस्क्ड, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको अच्छे से अप्लाई करना आता है, यू कैन डू दिस। देन in the year 2022 these three were asked, SSS similarity criteria भी प्रूव करने के लिए आया था, right? In 2023 something related to Pythagoras theorem and some proofs. In 24 सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आइसोसेलेस प्रूव करना है ट्रायंगल को, देन पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड, ओके, एंड देन ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2019 में 3 क्वेश्चंस आए थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, प्रूव करना है पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया था डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ओके। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दीज इन द रेशियो 2:3, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगेन 2021 में भी मिड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोलिनियर प्रूव करने वाला। 22 में अगेन डिस्टेंस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फॉर रेशियो 3:1, एरिया। 23 में भी सिमिलर टाइप ही है, एरिया, मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस। 2024 में अगेन डिस्टेंस, ठीक है, रेशियो गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोलिनियर प्रूव करना है, एरिया, ओके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओगे आप, राइट। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इससे बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जैसे साइन ए गिवन है तो कॉस और टैन निकालना, क्वाइट सिंपल, ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, राइट। ये इसमें वैल्यूज पुट होंगी, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। So here's a list of questions asked in the year 2020. Like cos A was given and we have to find sin A tan A, quite simple. Then we have to prove this, like LHS equal to RHS. And third is based on values you have to add from the table. In 2021, similarly, 1T ratio is given, you have to find any other two. Then proving of a formula and then substituting values. तो एक ही तरह के questions आ रहे हैं, okay? So 2022 में आपका एक proof वाला question आया था, one more for proof and one for adding values. 2023 1T ratio given, find any other two, proving of a formula and substituting values. 24 में जो आपके questions 5 questions आए थे, one is sin A is given, find cos A tan A. Then tan given, find sine cos, prove this identity, okay. Sine is given, find cos tan secant cot. And one is like an angle is given, find 6T ratios. Quite simple. For the chapter 9, some applications of trigonometry, these 3 questions were asked in 2019, okay. Broken tree वाला केस एक पूछा गया था, ठीक है, एक टावर वाला केस पूछा गया था और एक काइट वाला, right? So you have to practice all the applications. 2020 में again 3 questions were asked based on angle of depression, okay, angle of elevation, and third one was related to pole. 21 में person and building related, two poles related and tower related, ठीक है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी आते हैं इसमें और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ही आ रहे हैं, राइट। ट्री वाला क्वेश्चन आया था, ओके, 2022 में बलून वाला आया था एंड बिल्डिंग रिलेटेड। In 23 ladder related question was there, two buildings वाला question था and tower. In 24 5 questions were asked, right? Shadow of tower related, breaking tree, ladder based, car, moving car, kite, right? Chapter 10 circles में से 3 questions were there in 2019, okay? तो ये proving वाले questions थे 2 और एक calculation based using Pythagoras theorem, correct? So these 3 questions were asked in the year 2020. दो इसमें proof वाले questions हैं और एक में Pythagoras theorem solve, right? 2021 से 24 में इस टाइप के questions आए हैं, right? कुछ proving वाले questions हैं, कुछ angles find out करने वाले questions हैं, okay? Chapter 11 that is areas related to circles में 2019 में 3 questions were asked, right? एरिया फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल एंड सो ऑन। 2020 में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ गार्डन, ओके, एरिया ऑफ सर्कल, ऑल दीज वी हैड टू फाइंड आउट। 21 में 2 क्वेश्चंस आए थे, वन वाज लाइक रिलेटेड टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैलकुलेशन एंड वन वाज फाइंडिंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। Then 22 में area of the path and area of semicircular region, right? 23 में area of circle and sector perimeter, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 24 में area of circle पूछा गया है, area of ring, right? Chapter 12 surface areas and volumes में से in the year 2019 like number of small spheres formed out of a big sphere, this was asked, total surface area of cone related question and total surface area for a hollow cylinder, right? In the year 2020 volume of water in a tank, cylindrical tank given tha, okay, height of cylinder related question, total surface area of cuboid, these questions were asked. In 2021 volume of frustum of a cone, okay, radius of sphere, volume and surface area of cubical box, ये सब questions पूछे थे। So basically you need to learn all the formulae related to all the shapes like cone, cylinder, hemisphere, sphere, right? Everything you have to keep in mind. 2022 में one question was related to curved surface area of cone, okay, one was volume of water in a hemispherical bowl, one was radius of a sphere, right? In 2023, one was total surface area of a hemisphere and one was ratio of volume of cone and cylinder. In 24, total surface area of a toy we had to find and the edge of cubes. So chapter 13 statistics, इसमें से देखो किस टाइप के questions आए थे। 2019 में we had to find median. Second question was related to mean and third was related to mode, correct? 2020 में one question related to mean using the assumed mean method. देखो method भी mention कर सकते हैं, so you have to practice all the methods. So you can watch my playlist for this chapter if you want to learn these methods, correct? Cumulative frequency curve का question आया है एक और एक आया है median is given, missing frequency find out करनी है, right? 2021 में mode का formula use हुआ था, right? Construction of less than cumulative frequency and finding missing frequency if mean is given. 2022 में step deviation method से mean निकालनी थी, okay? Mode was given, frequency missing find out करनी है and ogive curve बनाना था for the third question. In 2023, one question was related to median, second to mean and third to again median. From chapter 14 that is probability, okay, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट्स सीखने हैं इसमें। इन 2024 बैग विद सर्टेन कलर्ड बॉल्स उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? 23 में अगेन सिमिलर बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2022 में वर्ड से हमें
एक लेटर फाइंड आउट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. In 2020, this question was asked, so we have some numbers. What is the probability that x square is less than 4? Very good question. ये अच्छा question था. You can solve this. Then 2019 में card से related था, right? So all these are the questions asked in various years, like past years for the class 10 mathematics. So if you are not able to solve any question or if you have any problems, you can post it in the comment section. बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो. अगर आप ये कंप्लीट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करके देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, then definitely you are going to improve your score in the maths exam. Right? If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel, learn with Nisha ji, and stay tuned for more updates. And thanks for watching the video. Best of luck for the future.